इन्होंने दुकान वालों को डरा के और अफसरों को डरा के दिल्ली में ऐसे हालात बनाने की कोशिश की है जिससे 1 अगस्त से दिल्ली में एक्साइज ड्यूटी देने वाली दुकानें कम से कम होती चली जाएं और इससे इनका अवैध शराब का धंधा फिर से यहाँ पे फलने फूलने लगे, क्योंकि 1 अगस्त के बाद अगर सरकार निर्णय नहीं लेगी तो कोई पॉलिसी यहाँ पे कोई पॉलिसी नहीं होगी, ये लोग चाहते थे। और अगर दिल्ली में वैध शराब की जानबूझ के कमी कर दी गई तो इसके बाद ये लोग गुजरात की तरीके से यहां भी धड़ल्ले से नकली शराब बेचना चाहते हैं। दिल्ली में भी फिर हमें बहुत दुख है, लेकिन दिल्ली में भी अगर ऐसा होता है तो नकली शराब बिकती है तो कोई बड़ी चीज नहीं है। जैसे जहां जहां नकली शराब बिकती है वहां फिर जहरीली शराब पी के लोगों की मौत होती है, हुश ट्रेजेडी होती है। दिल्ली में भी होने लगेगी, लेकिन हम ये नहीं चाहते और ना हम ऐसा होने देंगे। इसलिए हमने तय किया कि फिलहाल जो नई पॉलिसी है उसको बंद करके सरकारी दुकानें खोलने के आदेश हमने दिए हैं, क्योंकि इन्होंने दुकानदारों को डरा रखा है, इन्होंने अफसरों को डरा रखा है। इसलिए नई पॉलिसी बंद करके सरकारी दुकानों के जरिए अब लीगल लिकर सेल करने का हमने ऑर्डर दिया है, ताकि दिल्ली में कोई इलीगल शराब ना बेच पाए, ताकि दिल्ली में कोई स्पिरिट शराब ना बेच पाए। और चीफ सेक्रेटरी को मैंने ऑर्डर किए हैं कि किसी भी कीमत पर वो सुनिश्चित करें कि सरकारी दुकानों के जरिए करप्शन ना हो और किसी तरह की इलीगल मार्केट शराब की दिल्ली में ना खड़ी हो। ये मैंने ऑर्डर किया। लेकिन बीजेपी से इस तरह से पेश कर, मैंने उसका रीजन बताया आपको। ये लोग चाहते हैं कि अफसरों को इतना डरा दो और प्राइवेट दुकानदारों को इतना डरा दो कि उसके बाद में यहाँ से दुकानें बंद हो जाएं और इनका इलीगल दुकानों का धंधा, ये गुजरात की तरह से जैसे हजारों करोड़ का धंधा गुजरात में चला रहे हैं और लोग मर रहे हैं, ये चाहते हैं कि दिल्ली में भी ये हालात पैदा हों कि हजारों करोड़ का धंधा इनका यहाँ पे चले, नंबर 2 का, और नंबर 1 का धंधा शराब का बंद हो जाए। सर, तो क्या अब चेंजेस होंगे जब 1 तारीख से पुरानी लेकर पॉलिसी होगी तो कितने शॉप्स होंगे, जो डिस्काउंट रेजीम चल रहा था, टैक्सेशन रेजीम और जो ड्राई डेज थे, क्या वो सब भी रिवर्स होगा? हमने 2015 के बाद से ऑर्डर किया हुआ था कि दिल्ली में कोई नई शराब की दुकान नहीं बढ़ेगी, तो हमने 2015 से के बाद से दिल्ली में कोई नई शराब की दुकान नहीं बढ़ी। पुरानी पॉलिसी में जितनी दुकान थी उससे ज्यादा नई में भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं, मैंने अभी गवर्नमेंट शॉप्स खोलने के लिए ऑर्डर दिया। सर, दिल्ली में क्या इससे जो ट्रांजिशन पीरियड चलेगा, शराब की कमी तो नहीं हो पाएगी जिससे कि घटनाएं? नहीं, मैंने चीफ सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया है कि ट्रांजिशन पीरियड में किसी तरह का कोई कैओस ना हो। नहीं, अभी मैंने गवर्नमेंट के दिए, ओनली गवर्नमेंट शॉप्स। लेट द डिपार्टमेंट ओपन। हम it won't exceed 850, that we have made sure, but also these shops, the government run shops, they were closed down. Now they have been asked to submit details of the shops, how much of the shops are still there, so it's going to take at least a couple of days for this to come in order. तो ये इसीलिए तो इनकी साजिश एक्सपोज कर रहा हूँ मैं। कितने दिन का हमें मतलब वो गैप रहेगा for it to become functional now? तो डिपार्टमेंट विल डू as fast as possible। नई पॉलिसी में जो अलग समान रूप से दुकानें खुली थी, जैसे पहले था कि एक वार्ड में 3 दुकानें, किसी वार्ड में नहीं है, तो नहीं, अब तो वो पॉलिसी तो भी होल्ड पे हो गई ना। सर, ड्राई डेज और बाकी जो चेंजेस थे, क्या उम्र में बदलाव था, वो सब आपके सामने आ जाएगा वेब में। हम तो टिके हैं, लेकिन बीजेपी ने ईडी और सीबीआई की धमकी दे दे के जिस तरह से अफसरों को डरा दिया है कि वो अब इस पॉलिसी को आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। जो दुकान छोड़ के चले गए वो उनके ठेके देने को, नीलामी देने को तैयार नहीं है। प्राइवेट दुकानों को ये धमका रहे हैं कि छोड़ के चले जाओ, नहीं तो ईडी और सीबीआई में उठा के जेल भेज देंगे। तो वैसे में सरकार की जिम्मेदारी ये है कि यहाँ किसी तरह का कैओस ना हो। सर, एक अलग सवाल है, लोकायुक्त में शिकायत मैंने खूब स्कूल बनवाए दिल्ली में, दिल्ली सरकार ने, और कितने शानदार स्कूल बने हैं वो आप भी देख रहे हैं। हमारा काम है स्कूल बनवाना, हमारा धर्म है स्कूल बनवाना, बच्चों को पढ़ाना, वो हम निभा रहे हैं। बीजेपी का फर्ज है, बीजेपी का धर्म अपना उन्होंने चुना है कि हम इस तरह की हरकतें करें, वो करते रहे। पहले भी इन्होंने खूब जांच कराई थी, इन्होंने स्कूल के मामले में भी जांच कराई, कई और एमएलएज की जांच कराई, सत्येंद्र जैन की जांच में भी कल आपने देखा कि किस तरह से ईडी को सुनाया कोर्ट ने। तो उन सब में आप देख लो, कुछ भी नहीं निकलेगा, सारी चीजें क्लीन निकलेंगी। हाँ, लेकिन अब लीगल तरीके से उन्हीं को धमका रहे हैं ना, इलीगल तरीके से। थैंक यू।
All right, so that was a press conference by Delhi's Deputy Chief Minister Manish Sisodia, essentially saying that they conducted the tendering process in a transparent manner, saying that the number of shops has not increased, but that revenue was supposed to go up from 6,000 to 9,500 crores. Now, another point that the Deputy Chief Minister said is that because of threats received by the ED and the CBI, officers and liquor vendors were not prepared to take the policy forward or take licenses. And essentially what he also did earlier on in the press conference was make a comparison between what he called the Gujarat model and the Delhi model. Now, about the Gujarat model, what he said is that there is prohibition that adulterated liquor is being sold and that kickbacks are then paid to the government. Now, this is not the first time that people have lost their lives due to adulterated liquor. That is what he has said in connection to the Gujarat model. Now, essentially, this is interesting because this is also what the BJP is saying in relation to the Delhi government's decision when it comes to the excise policy. What the Delhi government, what the BJP is saying is that they are also getting kickbacks, which is now what Manish Sisodia is hitting back with, saying that no, that's what your government is doing when it comes to Gujarat and liquor shops as well. Now, another point that Manish Sisodia was making is that there was hefty corruption when it came to the earlier excise policy, which is why they brought in this new policy. Now, I'm crossing back over to my colleague Rupashri Nanda to give us more context on this. Rupashri, just take us through some of the key points that Manish Sisodia was making. Manish Sisodia actually made several points. The first important point that he made, which is newsworthy, is that he said, or he alleged, that because officers in the Delhi government and liquor owners, shop owners, have been threatened so much by by various agencies that neither the officers and nor the shop owners are willing to carry the Delhi government's liquor policy forward, which is why officers are also not willing to take it forward, and new people who have been given licenses or shops from which licenses have not been renewed, they're not applying for new licenses either. So under such a situation, when the new policy of the Delhi government is set to expire after two extensions on July 31st, Manish Sisodia said that we do not want a situation of a situation in Delhi where spurious liquor is available, which because it makes people vulnerable to consuming spurious liquor, and also raises the issue of possible loss of lives. And which he claimed that it is to avoid such a situation that he has directed the chief secretary to hold the policy, to put the policy on hold and allow only government outlets, that is, only corporations of the Delhi government, to sell liquor. One very important point that I made earlier also, which was reiterated by Deputy Chief Minister Manish Sisodia, is that private vendors will not be allowed to sell liquor in Delhi at least for the next 6 months, at least when a new policy is brought into action here in the national capital. The other important point he said that he actually compared the liquor policy of Gujarat, which remember is the home state of Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah, and the liquor policy in Delhi, and essentially he pointed out that even after in Gujarat there is prohibition. Liquor, he claimed, spurious liquor is available in large quantities and big payoffs are made, which is why people have lost their lives. And Sisodia claims that in Delhi, if the new policy had come into being, there would have been 849 shops in any case, and even that would have ensured that in Delhi, the number of shops per person would be lowest compared to some other states. So he tries to score a political point over here also against the BJP because of the liquor tests that have happened, or the liquor tragedy that has happened in Gujarat. So essentially, it is all out, a clash of both parties, the BJP and the Aam Aadmi Party, scoring huge or trying to score huge political points against the other on the liquor policy of the Delhi government. But for now, the new liquor policy, which was announced by the Delhi government, is definitely on hold. And until a new liquor policy is framed and it gets the approval of the left governor, the regime will allow only the government to sell liquor. Those were the most important points made by Deputy Chief Minister Manish Sisodia. He also said that when it has come to the other issue